Hi guys. So let's start today's current affairs. It's late, but let's just finish them. Okay. Now let us just go directly to current affairs. Okay. So Central Consumer Protection Authority, so basically guidelines for prevention and regulation of greenwashing and misleading environment claims 2024 issues by the CCPA. CCPA is nothing but the Central Custom Protection Authority. So guidelines जो कि है under the Consumer Protection Act, ठीक है, to foster truthful practices which environment claims both अवैध environment claims are both truthful and meaningful, ठीक है, मतलब ऐसे केसेस में जहाँ पे इन्वायरमेंटल जो भी क्लेम्स हो रहे हैं कि भाई साहब ये जो चीज़ है वो इन्वायरमेंट को मतलब गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है और ये मीनिंगफुल भी लगे, तो ऐसे केस में अच्छे से ट्रूथफुली प्रैक्टिस होनी चाहिए. The key highlights are defines greenwashing as any deceptive or misleading practice which include concealing, omitting, and hiding relevant information by aggregating, making large, false or unsubstantial environment claims. So basically गलत claims करना, ठीक है. The use of any symbols, imaginary emphasis on positive environmental effects. Basically आप आता है ना नेगेटिव जब आप उसको पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हो, that's emphasis on positive environmental aspects. Okay, so this is related to the Consumer Protection Act 2019. So just move it. Fifth Global Standards and Symposium CGSS 24 convened in New Delhi. So organized first time in Asia Pacific region by the International Telecommunication Union. So let's just note down this one. Fifth Global Standard Symposium GSS 24 in Delhi हुआ ये. और तो this is फर्स्ट टाइम हुआ ये एशिया पैसिफिक रीजन जो था, और ऑर्गेनाइज करवाया था ये आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में. ठीक है, एंड होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ कोर्स बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन है तो. ओके, थीम क्या थी इसकी, वेरी मच इम्पोर्टेंट आ जाता है ये. तो थीम इसकी थी आपके पास चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेव, emerging technologies, emerging tech, comma innovation. Okay, these are some of the figures. So ITO established in 1865 is the oldest UN specialized agency for information and communication technologies. Okay, key outcomes क्या निकले. Consensus based international standard system calls for continued effort towards bridging standardization gap between development and developing countries. देखो बेसिक क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करते हो तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट है, लेकिन कई कंट्रीज के पास इतने पैसे नहीं होते कोई इस तरह के इक्विपमेंट लांच के कि जिनका रिजल्ट इंटरनेशनल लेवल को मैच किया जा सके. ठीक है, तो कंटिन्यूड एफर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए कि देयर इज अ गैप बिटवीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड द रीजनल स्टैंडर्ड डोमेस्टिक स्टैंडर्ड. ये इनको कवर करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा चाहिए, तो उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट चलेंगे. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर emerging digital technologies. So encourages the strength and collaboration among standard development organization SDOs to enable developing country to embrace digital environment. So digital environment के लिए embrace किया गया. High level segment catalyzing change recognizes global digital compacts, emphasis on international cooperation, highlighting importance of emerging digital technologies के ऊपर emphasize again, including the AI again. हाँ? Standards and SDG, Sustainable Development Goals.
Now, highlights the significance of international standard in enabling sustainable development of emerging digital technologies. So standards for SDGs campaign. Okay, U for SSC. So it is nothing but a United for Smart Sustainable Cities. U for SSC is nothing but United for Smart Sustainable Cities. So it's an initiative basically. It is led by International Telecommunication Union and UNECE. You see, nothing electronics and communications economic commission for Europe. And the UN Habitat encourage fostering partnership to empower cities and community to achieve the UN standard sustainable development goals. देखो तो बेसिकली आपने देखा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ग्लोबल ट्रेड करना है आपको तो आप घर की चीज़ को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है तभी वो जाएगी। ग्लोबल कोलैबोरेशन आपकी तभी होगी जब आपके स्टैंडर्ड उनसे मैच करेंगे। इन्वायरमेंट तभी आपका सस्टेन रहेगा कि आपके स्टैंडर्ड मैच करेंगे तभी आप उस लेवल की चीज़ बना सकते हैं क्योंकि टॉप ऑफ दिस स्टैक अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल टाटा है तो टाटा इज हैज़ अ गुड गुड कंपनी लाइक है ना तो वो एक वर्क टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट व्हाई बिकॉज दे हैविंग अ गुड इंजीनियरिंग की टीम है उनके पास तो वो ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन वो महंगा है ठीक है बट आप छोटे लेवल पे एक बना रहे हो कार एक तो आप वो मटेरियल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टाटा के बराबर भी नहीं जा सकते अभी तक ठीक है until and unless you discovered a better material than that okay efficiency in cost and effectiveness of course तभी आप इंटरनेशनली जा पाओगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन होनी चाहिए दैट्स मोस्ट द मस्ट okay pathways out of poly crisis poverty prosperity and planet report released by World Bank Group let us just move in poverty prosperity and planet report by World Bank Group okay ओके ट्रायंगल एनवायरनमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉवर्टी देखनी पड़ती है कम हो प्रोस्पेरिटी ज़्यादा हो और प्लान ठीक है हाउ मच यू आर एनवायरमेंटली गुड key findings stalled globally poverty reduction it has slowed to a near standstill during past 5 years impacted by poly crisis of course poly crisis refers to a situation where the multiple crises of slow economic growth increases fragility climate risk and heightened uncertainty have come together at same time so poly crisis is nothing पॉली क्राइसिस है कि एक समय पे देखो क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल बारिश लगी है बारिश के साथ लैंडस्लाइड आ जाए या फिर स्नो कुछ और चीज़ें हो जाए लैंडस्लाइड आ जाए बाढ़ आ जाए तो बारिश का इम्पैक्ट है वो और कोई और इम्पैक्ट आ जाए इन्वायरमेंटली एक होता है ना कि मुसीबत एक साथ नहीं आते दैट्स वाई मल्टीपल क्राइसिस ठीक है सिचुएशन वेयर मल्टीपल क्राइसिस comes together and of course and slow economic growth ठीक है क्लाइमेट रिस्क आ जाए उससे अनसर्टेनिटी हो जाए ओके नाउ non-attainment of targets global population living in extreme poverty is projected to be 7.3 in 2030 so the global population living in extreme poverty is projected to 7.3 in 2030 भी ये 8.5% है 7.3 in 2030 8.5 in 2020 this is a double the World Bank target of 3% and farther from the elimination target of UN's sustainable development goals
Okay, the global prosperity. Okay, let's just see the global population living in extreme poverty जो होगी वो 7.3 हो जाएगी percent. It's currently it is decreasing of course I guess. Okay, it is a projected which is non-attainable of course. India's significant fall in Indian living extreme poverty from 431. So India significant fall देखा गया इंडियन में. So Indian living in extreme poverty from 431 million जो 1990 में थे वो 129 मिलियन है 24. World Bank define extreme poverty which is less than $2.15 per square. Extreme poverty. So defines that less than $2.15 per person per day. Just transition. So basically, I can see now ये रिपोर्ट आई है इंडिया हैज a significant fall in extreme poverty जो कि बहुत ही 431 मिलियन के करीब थी. It is drastically reduced. Okay, the time is of course the it is approximately 34 years, but of course we have reduced that. Just transition, just finance report released by environment think tank iForest. So just note down कौन रिलीज करता है रिपोर्ट को. Just transition, just finance released. So by environmental think tank iForest. Now, the preliminary study by the think tank were carried out in coal-dependent districts Korba, Angul, Bokaro, Ramgarh to understand the calculated cost of transition जो भी हो रही है cost components and factors. तो स्टडी पे हम नहीं जाएंगे की फाइंडिंग देखेंगे तो करंटली कॉल अकाउंट फॉर द 55% ऑफ इंडियन कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भी है कमर्शियली वो कोल पे डिपेंड है. And coal-based thermal plants produces more than 70% of electricity. So coal accounts about 55% of India's commercial energy requirements. And of course, the second one is very important key. Coal-based thermal power plant produces more than 70% electricity. Now, this is India will require more than $1 trillion, of course, at current rates to transition away from coal to thermal coal and okay, transition away from अगर देखो ट्रिलियन ऑफ डॉलर चाहिए अगर इस रेट पे अगर आपको ट्रांजिशन करना हो कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट से ठीक है ग्रीन एनर्जी पे बेसिकली आपको अगर ट्रांजिशन करना है तो 70% इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी कोल से आ रही है. कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट 70 हाफ ऑफ दी 50% से भी ज़्यादा है. वो कमर्शियली आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है कोल से पूरी हो रही है. तो अगर आपको कोल इज नॉन ग्रीन ना जनरेट हो रहा है कब टॉक्सिन्स. तो अगर आपको यहाँ से कोल माइनिंग या थर्मल पावर प्लांट से जो कोल यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आपको ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट करना है ट्रांजिट करना है तो इट रिक्वायर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन द नेक्स्ट 30 years. Of course you can see the two main category में transition divide किया गया है green energy cost and for infrastructure development and non energy cost for supporting effect workers. तो दो में divide कर दिया. Transition cost, it is green energy cost but is infra से related and non-energy cost 48% which is about supporting workers and community.
Okay, moving next. District Mineral Foundation and Corporate Social Responsibility CSR funds are important resources to initiate this transition. Of course, DMF के जो funds हैं वो international financing की ज़रूरत पड़ेगी. Of course, India's long term low carbon development strategy इसके अंदर भी आपको financial measures लगाने पड़ेंगे. Okay, coal in India, world's second largest coal producer. इंडिया की बात करते हैं. Let us just note down this one. Second world largest coal producer India. Fifth largest country in terms of coal deposit. Largest term of coal deposits. हाईएस्ट कोल रिजर्व आपको मिलेंगे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़. ठीक है. कोल की कैरेक्टरिस्टिक नथिंग है, इसमें ऐश कंटेंट बहुत होता है, लो इन सल्फर. ठीक है. और हाई ऐश फ्यूज टेम्परेचर. So heavy reliance on the AI could pose risk in financial sector, of course. So this just will write down na कि 90th high level conference organized by RBI न्यू दिल्ली में हुई है. कंसर्न द ग्रोइंग यूज ऑफ एआई. Growing use of AI could enable a few technology providers to dominate the marketplace. ओके, तो मेजर इसके हो सकते हैं एआई रेगुलेशन अथॉरिटीज बनाना, एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी एक्ट, मैक्सिमाइज डिफेंस कैपेबिलिटीज. ठीक है. वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय यूएन. वुमेन. तो दिस वर्ल्ड सर्वे on the role of women development report given by UN Women. The theme is nothing but harnessing. So वुमेन्स की बात आती है तो हार्नेसिंग या फिर हरेसिंग पहले आता है. सोशल प्रोटेक्शन और जेंडर इक्वालिटी, resilience, transformation. Okay. It takes stocks of progress, gaps, and challenges in building comprehensive gender responsive social protection system. Need of gender responsive social platform. So, gender responsive approaches for social protection actively seek to respond to gender specific risks, vulnerabilities, and constraints such as women lesser access to resources, a disproportionate responsibility for unpaid care and domestic work, gender based violence, and lack of voice decision making. जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोटेक्शन क्यों होनी चाहिए सोशली, कि मतलब जेंडर के लिए बेसिकली वुमेन्स के लिए अगर आप देखो तो उनके जेंडर स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, वनरेबिलिटीज होती हैं. अगर आप देखो रिसोर्सेज के लिए एक्सेस कम मिलेगा बिकॉज ऑफ हर जेंडर, है ना. डिस्प्रपोर्शनेट किया जाएगा, उनको केयर नहीं मिलेगी फॉर दैट. डोमेस्टिक वर्क के लिए ऑफ कोर्स, एंड वायलेंस इज बेस्ड ऑन द जेंडर. Now, key findings are that 2 billion women and girls lack access to any form of social protection. So 2 billions of women and girls combiningly they have lack of access. ठीक है, to the social protection जो होती है बेसिक मिलनी चाहिए.
कैश बेनिफिट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, पेंशन, उसको उससे परे रखा गया है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, है ना। So okay, without also this one, see, this is very important thing. 63% of women globally still give birth without access to maternity benefits. Without maternity benefits, वो फिर भी birth दे रही हैं. That's a very huge issue. Okay, recommendations are gap and biases को address करना, ठीक है. Coordination with gender responsive employment policies, social protection policies बनाना, a right based approach. Now, मनरेगा Indians initiative to the, ठीक है, वो इंडियन की तरफ से, ठीक है, मतलब देना। now, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो इंडिया की तरफ से आपकी आ जाएंगी, मनरेगा एंड PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सब्सिडीज टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, दिस LPG कनेक्शन से रिलेटेड है। Okay, moving next. AI Center of Excellence. The Union Minister of Education announced the establishment of AI COE on health, agriculture, and sustainable cities. So, part of a vision of Make in India, of course. So, make AI in India and make AI work for India. The establishment of these centers are announced into the budget, of course. Further impetus जो आएगा startup ecosystem पे, of course. Now, blue line. UN said that the Israel military has fired on its peacekeepers near the blue line. So blue line. So blue line is established by United Nations interim force in Lebanon, UNIFIL. So आज के बाद in 2000. So it is 120 kilometer along southern Lebanon to ensure the complete withdrawal of Israeli forces. So this is a blue line, ठीक है, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो, मैं ड्रॉ भी ब्लू ही कर रहा हूँ. It acts as de facto border between Israel and Lebanon, ठीक है, इसराइल ये रहा आपका और लेबनान के बीच में बेसिकली बॉर्डर, डिफेक्टो बॉर्डर. इसराइल एंड लेबनान. लेट अस जस्ट गो कि डिफेक्टो का मतलब क्या है. So de facto border is a boundary that is not set by any, okay, it is not set by a treaty, not set by a treaty, but it is used by all the state involved, but used by states जो भी province होगा involved. Okay. INS Samarthak, India's first of class indigenous multi-purpose vessel INS Samarthak launched. Samarthak. It is a multi-purpose vessel. So highly specialized multi-role platform envisaged to be a trial platform for development of next generation weapons. One of the two multi-purpose vessels being indigenously built by the Australian Turbo Point Navy, maximum 15 knot speed. Other roles के रहेंगे launch and recovery of such as surface and aerial targets, maritime surveillance, and trawling human assistance. Okay. Third, तो terminal high altitude area defense battery system to add Israel. तो थार जो है वो इसराइल को देने वाला है अपना अमेरिका. थार इज बेसिकली अ डिफेंस सिस्टम यूज मेड बाय द लॉकहेड मार्टिन यूएस, ठीक है. सो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, शॉर्ट मीडियम सबको टैकल कर लेता है ये,
Okay, so now it is employing the hit kill technology. Third, battery consists of 95 soldier truck-mounted launchers, interceptor radar surveillance, and this. India bought S-400 Triumph air defense missile system from Russia, of course. Nile Basin. Recently, agreement on equitable use of water resources from the Nile River Basin has come into force despite the notable opposition of Egypt. The Nile is world's longest river एंड अफ्रीकन कंट्रीज का 10% जो भी ड्रेनेज होता है वो वही जाता है ठीक है 11 countries south to north, two main tributaries white nile and blue nile white nile and blue nile and अदर ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं तो बेसिकली एग्रीमेंट हो रहा था यूसेज ऑफ द वाटर इज जो भी रिसोर्सेज था जो मतलब जो भी वाटर होगा किसी भी पर्पज के लिए यूज होना था बट इजिप्ट वाज लाइक इन अपोजिशन बट इट इज पास्ट है ना persons with benchmark disability. Recently, Supreme Court held that the existence of physical disability should not be a ground to disbar a candidate from medical education. So, medical education से अगर आप PWD candidate है आपको निकाला नहीं जा सकता. So, it's of course not less than 40%. Okay, you can see currently graduate medical education regulation 1917 bars person of benchmark disability from ABS. Okay, so not less than 40% of specific disability certified by the certified authority. Special provinces क्या है इसमें free education to children, 5% reservation in government, higher rate education, etc. etc. Okay, SpaceX has achieved a significant milestone in the space exploration by landing a Starship rocket using an innovation structure called Mechazilla. It is a nickname of the largest 400 feet rocket catching structure. It is basically अगर आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है रील्स वायरल हो रही है कि एक रॉकेट आया और उसको किसी चीज़ ने कैच कर लिया वो 400 फीट का एक रॉकेट कैचिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर से रॉकेट आ रहा है जैसे अभी स्पेस एक्स ने क्या किया था कि जो रॉकेट्स लास्ट ईयर रॉकेट जो आ रहे थे वो स्पेस में डिस्ट्रॉय हो जाते थे क्या हो रहा था आप नीचे से ऊपर जा रहे हो मून पे गए मून से जब आप वापस आओगे तो आपका रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप एक कैप्सूल में बंद होकर पानी में गिरोगे अब क्या हो रहा था 2 साल पहले आप ऊपर जा रहे थे आप रॉकेट से वापस आ रहे थे और उसी रॉकेट को डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए उस रॉकेट को लैंड करवाया जा रहा था ठीक है वही रॉकेट लैंड हो रहा था वापस आके इनकी धरती पे अब इन्होंने क्या किया अब उस रॉकेट को कैचिंग स्ट्रक्चर बनाया ठीक है इनकी मैकेनिकल आर्म्स हैं स्ट्रक्चर की बेसिकली ये आ रहा है और इसको कंट्रोल्ड किया जा रहा है अगर वो अपनी स्पीड में होगा रॉकेट तो कैच करना इज इम्पॉसिबल तो वो उसकी स्पीड जो वही स्पीड या फिर वेलोसिटी जो भी मैन्यूवरेबिलिटी है उसको कंट्रोल्ड मैनर में रख के उसको एक मैकेनिकल आर्म्स को कैच करवाया जा रहा है ठीक है Small modular reactor. So Google signed its first ever corporate agreement with California-based Keros Power to purchase nuclear energy from multiple small modular reactors (SMRs). So SMRs are advanced nuclear reactors that have a power capacity to 300 megawatt per unit. Only the two SMR project reached operational stage globally. In India, budget 2024-25 announces the development of Bharat small reactors. Okay, let us just move. Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, World Society Day. So it's student. Okay, Students Day. Observed on 15 October. So on the of course administrator जो हमारे साइंटिस्ट थे अब जी अब्दुल कलाम साहब okay 11th president transforming India to developed nation by 2020 okay okay so wings of fire इनका अगर आप देखें तो कलाम साहब लिटरेचर
वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है। अवार्ड भारत रत्न 1997, पद्म विभूषण 1990। Okay, so I think it's enough for today, and we'll move next, huh, in the next video.